नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के इस लाइव इंटरैक्टिव सेशन में। मैं हूं आपकी मेजबान सिमरन सिंह। आप सब हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं पीएम ई विद्या के चैनल नंबर 9 से 12 पर, यानी 9, 10, 11 और 12। हमसे जुड़ने का एक और जरिया है, आप जानते हैं हमारा यूट्यूब चैनल है NCERT ऑफिशियल। So viewers, it's around 10 a.m. on your watch, and on our Fridays, that is 10 a.m. to 11 a.m, frequently we come up with our webinar series that is Listening to Learn. And I'm delighted to inform all our viewers that till now we have covered over 31 sessions under this webinar series that is Listening to Learn. It's brought to you by Department of Education in Science and Mathematics, NCERT. And we have conducted our sessions with the esteemed panelists. To name a few, we have had our sessions with Dr. Randeep Guleria from AIMS, where we have discussed about one of the most important topics, like how to stay healthy in today's time. Besides that, we also come up with various interesting topics. To name a few, Mission Aditya, the beautiful world of gemstones, learning science from the kitchen garden, and many more. And you know what the best part is? Today also we are going to discuss about a really interesting topic. It's about dinosaurs. Dinosaurs of India, dead but doing well. Now dinosaurs, they are objects of fascination, whether it's young or old, and we have heard much about them. They've always been in the news. और इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हैं। चलिए उनसे आपका परिचय करा देते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गगन गुप्ता। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सुमन जी, आपका इस सत्र में धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर DSM NCERT से हैं, और यदि आपके कोई भी सवाल हो हमारे पूरे सत्र के दौरान तो बेझिझक हमें लिख भेजिएगा NCERT ऑफिशियल के कमेंट सेक्शन में। इसके अतिरिक्त एक कॉन्टैक्ट नंबर भी फ्लैश हो रहा है आपकी स्क्रीन पर। यू मे गिव अस अ कॉल एट 8800440559। Besides, here are some mail IDs for PM eVidya channel number 9 to 12. You can also write to us at dth.class12@ciet.nic.in. So sir, as today we are going to discuss about a very interesting topic, I request you to also introduce our second guest for today's session and provide us more guidance regarding the topic, that is dinosaurs of India, dead but doing well. Yeah. नमस्कार दोस्तों, इस सत्र के पहले सेशन के लिए 2022-2023 में जो सेशन शुरू हुआ है, इस सेशन में आज हमारा 32वां सेशन शुरू हो रहा है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रोफेसर अशोक साहनी लखनऊ से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर अशोक साहनी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं कि NCERT के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग द्वारा ये सीरीज जो चलाई जा रही है, वेबिनार सीरीज, इसमें हम देश और दुनिया के भारतीयों को संपर्क करने की पूरा प्रयास करते हैं। आप हमें अपना विषय ज़रूर भेजिए। आपके विषय के आधार पर हम पूरी दुनिया से इस कोशिश करेंगे कि उसके विशेषज्ञों को हम आपके समक्ष लाएं, आपके साथ बात कराएं। ये प्रोग्राम हमारा CSIR, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंडिया के साथ साथ एक संपर्क कार्यक्रम है प्रभास, प्रवासी भारतीय एकेडमिक और साइंटिफिक संपर्क। इस प्रोग्राम के साथ में हम विभिन्न मंत्रालयों तथा विभिन्न रिसर्च लेबोरेटरीज़ के संपर्क से साथ इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। हम 31 संस्करण पहले कर चुके हैं, जैसा कि मेरी साथी सिमरन जी ने आपको सबको बताया। अभी आगे आने वाले इस वर्ष में भी हम लगातार इस तरह के सत्र करते रहेंगे, जिसमें कि हम इंडियन डायस्पोरा को जोड़ने का पूरा प्रयास करते हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर अशोक साहनी मौजूद हैं, जो कि आज हम बात करने वाले हैं इंडियाज़ डायनासोर्स डेड बट डूइंग वेल। हिंदी में मैं कहूँ, भारत के डायनासोर मृत परंतु बहुचर्चित। आज भी हम इनसे बहुत सारी इंफॉर्मेशंस लेते हैं, चाहे वो जियोलॉजिकल हों और साइंटिफिक हों या एंथ्रोपोलॉजिकल हों। तो दोस्तों, प्रोफेसर अशोक साहनी is presently a professor emeritus with Punjab University, Chandigarh. Professor Sahani obtained his PhD degree in geology from the University of Minnesota, Minneapolis, United States in 1968. And then he returned back to work with
universities like Lucknow and Chandigarh. Professor Sahani is a fellow and associate of several prestigious scientific academics and societies, including the Third World Academy at Trieste, Italy, Humboldt Foundation, Germany, Associatenger, that is Geological Society of Foreign Associates in France, Paris. He is honorary MSVP USA and also a fellow of all the 3 Indian science academies in India. Here, Professor Sahani has been associated with several UNESCO IGCP projects as national and international leader. He has worked at the American Museum, Natural History, New York, National Museum, Natural History, Washington, D.C., and taught as a visiting professor at Bonn University, Germany. Currently, Professor Sahani is a consultant to the Evolution Park and Gallery at Science City, Kapurthala, and has established the Dinosaur of India Gallery at Sector 10, Chandigarh Museum. Professor Sahani is a recipient of the Indian National Science Academy D.N. Wadia Medal in 2009 for his contributions to earth sciences. In 2011, he was awarded the prestigious Lifetime Achievement National Geoscience Award by the Ministry of Mines, Government of India. In 2014, the Electron Microscope Society of India conferred upon him a Lifetime Achievement Award. Rather recently, in 2020, Professor Sahani was awarded the Lifetime Excellence Award by the Ministry of Earth Sciences, Government of India. Professor Sahani has over 8,000 citations of his research work. A very esteemed scientist of the country, Professor Sahani, is here. Today he is going to talk about dinosaurs. Good friends, just to introduce what he is going to talk about, let me just put some numbers. See, the earth, पृथ्वी बनी लगभग 454 करोड़ साल पहले, 454 crore years ago, that is 4.5 billion years ago. The first life on the earth, which is estimated to be occurred on this planet, was nearly 400 crore years ago. That is nearly after 54 crore years of the evolution of the earth, of the existence of the earth. Just for comparison, the life of human on this planet earth is nearly 60 lakh years, that is nearly 6 million years. It is estimated that the dinosaurs existed on this planet earth around 240 million years ago, that is around 24 crore years ago, and they remained on this planet earth for nearly 170 years ago. Nearly for 170 million years, they remained on this planet earth for nearly 170 million years, that is nearly 17 crore years. For a time of 17 crore years, they remained on this planet earth. 17 crore साल वो planet earth पर रहे, उसके बाद वो extinct हो गए. प्रोफेसर साहनी हमें बताएंगे कि क्या हुआ होगा उस समय. We will try to look back into the history of that. Yes, dinosaurs are were giant as the 10 times of an animal, like elephant on the planet earth, and as small as the small gorilla or small bird on this planet earth. And so now we are very much eager to listen Professor Sahani all about dinosaurs on this planet earth. Please, this was all yours, Professor Sahani. Thank you very much for the invitation. It's a pleasure to give this talk. As you mentioned, I'm going to be speaking about dinosaurs of India and dinosaurs in general. Even though they died about 66 million years ago, they're very much in the news. Most of the world magazines, as you can see from this slide, Newsweek, Time, Science, they constantly highlight the discoveries of dinosaurs or the characteristics of dinosaurs. So today we will examine
what actually fascinates young and old alike. And I would like also to first start, you know that dinosaurs are fossils, but in order to explain what fossils are, I would like to tell you what they are. So a fossil is the remains of past life or of their activity. That's very important. So as you can see in the top left corner, you have a fossil fish. Actually, if you look very carefully, you will see that there are two fishes. The big fish is eating the small fish. Maybe I can show you. This is the small fish. This is the big fish. So while this activity was going on, they became preserved. So fossils usually preserve well. Sometimes they don't preserve well. But here in Gujarat, we have insects and amber. As you can see, the whole insect is preserved in amber. You can see the antenna and you can see the thorax, the head. So these are really fabulous fossils. This one, of course, is found in India. And as I said, that it's not only the preservation of past life, but it's also the preservation of their activity. This is a very interesting, very famous footprints of dinosaurs. There are two dinosaurs walking along a beach. This is one dinosaur, and this is the companion dinosaur. So they're walking side by side, and as you can see, the right dinosaur here nudges the left dinosaur, and the footprints are displaced. So this is, you can learn a lot. You can learn a lot by fossils. You can learn a lot by looking at the footprints and examining them, or any activity of past life. So there's a great joy, the joy of discovery when you look at fossils. And this is what paleontology is all about. Basically, I'm a paleontologist. I'd like to tell you a little bit more of life on Earth, because in order to understand dinosaurs or mammals or plants, you have to understand the entire picture. One of the biggest factors that prompted life on Earth was the fact that on Earth you have atmospheric oxygen, something like 21%. But if you look, let's look at this graph. If you look at the x-axis, on a log scale, 4.65 is the origin of Earth. Then you have the oldest rocks. Then you have the first organisms. The first organisms came 1 billion years after the origin of the Earth. But this is what I want to talk to you about. You and I are here. The dinosaurs were here because of an event that took place around 2.2 billion years ago. What was it? It was when photosynthesis started on Earth. There was some blue-green bacteria that started the process of photosynthesis. And as these plants grew and multiplied, more and more oxygen, if you look at the vertical axis or y-axis, you will see that the oxygen on Earth progressively increased. And when it was something like 50 to 60% of the present value, then it was possible for large animals and active animals to evolve. So there's a very close link between the amount of oxygen on Earth and large animals or plants. So this is a very important point to actually understand.
Now, one thing that many people think that is very remarkable, that at the present, India is attached to Asia, but 200 million years ago, this is 200 million years, 200 million years ago, India was in the southern hemisphere. Today we are in the northern hemisphere, but 200 million years ago we were in the southern hemisphere. We were next to Madagascar, Africa, South America, and we were next to Australia and Antarctica. How has this got to do with dinosaurs? It has a lot to do with dinosaurs because the Indian dinosaurs evolved when India was in the southern hemisphere, and therefore most of the Indian dinosaurs are related to those from Madagascar and South America. So this is a very important point, that India has its unique assemblage of dinosaurs which evolved at this particular time when India was in the southern hemisphere and arranged like this. But one remarkable event, in fact, the geology of India is unique, and what a remarkable event happened, that India broke free from its position near Madagascar, and this was the time when India was isolated in the Indian Ocean, when dinosaurs' life in India thrived. So it's important to understand that dinosaurs were around India when it was like an island, as you can see. And as I said, it took some time for India to reach Asia, but by this time, the dinosaurs had become extinct with 65% of all life. This is the time when dinosaur extinction took place, and this is the position of India as an island surrounded by oceanic waters, moving towards Asia. So these two things are very important in understanding the characteristics of Indian dinosaurs. They are very different to those found in Europe, China, Mongolia, or North America. They have the unique characteristics. Now, one of the questions is, one of the fascinations with dinosaurs is that some of them were very large. So the scientific question is, how big can a land animal get? But is there any limit? Yes, there is a limit. And the fascination with dinosaurs is absolutely appreciated in the sense that they reached the limit, or what is presumed to be the limit, of how big a land animal can get. They weighed, some of them weighed around 70 to 80 tons. If they got bigger than that, the bones would not be able to support this weight and they'd collapse. So one fascination is that if you look at the present day large animals like an elephant only weighs 5 tons. But dinosaurs, the biggest dinosaurs, they weighed 70 to 80 tons maximum. Most of them were around 40 to 50 tons. But this is one of the reasons why dinosaurs fascinate young and old, that they reached what is the permissible limits of how large an animal can get. Now, I would like to tell you, because this is an important issue, and those of you who are science oriented, you will understand, that
dinosaurs are believed to be cold-blooded. So there are many advantages of being large. If you are large, then predators will not look at you. Those who want to eat you, they will not look at you. The other thing is that if you're large, there's more volume to surface area. You have more volume to surface area. That means that you will lose less heat, and this is basically a strategy that is to insulate all the very critical organs like heart, liver, lung. So if you are large, these organs will be insulated, and so large size is also a strategy for thermal insulation. But you have small sized dinosaurs as well. The smaller you get more surface area to volume, and therefore you gain heat or you lose heat very, very fast. And it's interesting in the context of the evolution of birds that it was the small dinosaurs that developed feathers. They developed feathers because, as I said, they were liable to lose heat and gain heat rapidly, which is not a very good thing for a cold-blooded reptile, and therefore feathers insulated them. And it is a small dinosaur that gave rise ultimately to the birds. So the present-day birds, as I will show you in the end slides, are actually the products, the evolutionary products of small dinosaurs that had feathers. One other thing, I want to talk about those issues that are not actually talked about much, and the blood pressure of dinosaurs. So we know, let me just show you this graph. If you look at this graph, you will see this is blood pressure graph, and these are metabolic rates. So if you look at this line here, birds have very high blood pressure. Mammals are here, including us. But reptiles usually have low blood pressure. But just look at this dinosaur. If you are large and your heart is very small, this small heart has to pump blood all the way back to the skull. It has to pump blood all the way to the tail. So this is a very important issue, that it's very difficult to maintain such a posture where the head is very held high, because the heart has to pump blood very high. So in the case of large dinosaurs, unlike most reptiles, the blood pressure was pretty high. It had to be high, otherwise there was no way the blood could be pumped by the heart. So there are some points that you must know about large and small dinosaurs, which will tell you some biomechanical and biophysical factors that shape the evolution of dinosaurs. This is from one of my exhibits in the Chandigarh Government Museum. This is actually just to show that most dinosaurs have been painted as fierce, uncaring animals, but they were like any other reptiles. So this is life size. The scale is 1 meter, so many meters high. So you can see the neck muscles, and then you had the esophagus, ribs, heart. The heart was very small. So as I was telling you, this small heart had to pump blood all over. So it was doing a lot of work.
So it had, so this diagram basically shows you that the dinosaur was like any other reptile, and it cared for its young, laid eggs, as we will see. So now in India, we have two mounted dinosaurs. They are really very impressive. This is in the Indian Statistical Institute in Kolkata. This is known as Parasaurus tagorite. Bade pav wala reptile. And it was named, the species was named, uska naam tha Parasaurus tagorite, because it happened to be one of the anniversaries of our Guru Rabindranath Tagore, and that's why this species name is Parasaurus tagorite. So this is a very impressive and remarkable dinosaur which is housed in Calcutta. Now, as I said, हम लोग को लगता है कि अगर इंडिया में एक खास किस्म का प्रेडेटरी डायनासोर था, आप लोगों ने हमेशा सुना है, यू हर्ड द नेम ऑफ टी-रेक्स. वेल, इन इंडिया जो लार्ज डायनासोर था और जो अभी हम लोग को इसके बारे में पता चला है, उसका नाम है राजासोरस नर्मदेंसिस. ये, और मैंने दिखाने की कोशिश की है. I've tried to show that like all predators, whether it is tigers or whatever be the predator, they were always hunting prey. So this is Rajasaurus looking for dinner. The first discovery of Indian dinosaurs was made in Jabalpur in 1828. So this was a man, his name was Captain William Sleeman. In fact, इनका घर जो था जबलपुर कंटोनमेंट में था, अभी भी है. मतलब इतने साल हो गए, 100 साल से 150 साल बीत गए, मगर वो स्ट्रक्चर अभी तक है. और ये जब एक दफ़े अपने बाग बगीचे में टहलने गए, when he went for a walk, there are two hills very close to where he lived, and on these hills in 1828 he was able to find very large bones. तो उनके समझ में नहीं आया, इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि 1828 में dinosaurs were not defined. They were defined as a reptilian group in 1842. तो इन्होंने क्या किया, जितने इन्होंने लार्ज बोन्स और स्मॉल बोन्स कलेक्ट किए थे, इन्होंने उनको क्रिएट करके वो उन्होंने लंदन भेज दिए. और हो सकता है जब 1842 में डॉक्टर ओवेन ने रेप्टाइल्स को क्लासिफाई किया और डायनासोर्स को डिस्टिंक्ट किया, तो हो सकता है कि इसमें इंडियन बोन्स भी, जो फॉसल बोन्स थी डायनासोर्स की, उसमें भी शामिल थी. तो इनफैक्ट इनका अगर जबलपुर से नॉर्थ में जाएंगे तो एक गांव है स्लीमानाबाद, जो इनके ऊपर it's named after it. After that, of course, after 1828, many discoveries were made. अगर आप आज देखेंगे इंडियन कॉन्टिनेंट को, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, तो डायनासोर की हड्डियां और डायनासोर का मटेरियल कच्छ से लेकर के राजस्थान, मध्य प्रदेश, जबलपुर जो मध्य प्रदेश में है, तेलंगाना और तमिलनाडु, इतनी जगह में पाया जाता है. और
इनकी डायनासोर मेघालय में भी पाए जाते और ये एक जगह पाकिस्तान में भी है जो कि बलूचिस्तान में है शायद, वहाँ भी डायनासोर पाए जाते। कहने का मतलब ये है that dinosaurs are found in many places in central India. एक खूबी है, एक और खूबी है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि डायनासोर्स जो है का एवोल्यूशन जो था वो करीब 225 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था और उनका एक्सटिंक्शन जैसे मैंने आपको पहले बताया, they became extinct around 65, 66 million. And India has some of the oldest dinosaurs, जो कि Triassic dinosaurs हैं, जो कि जैसे मैंने आपको बताया जो कि 200 मिलियन या 225 मिलियन है। ये सब आंध्रा, जो पहले आंध्रा कहलाता था, वहाँ मिलते हैं। तो सबसे ओल्डेस्ट डायनासोर भी हिंदुस्तान में मिलते हैं, जुरासिक डायनासोर भी मिलते हैं वहाँ, ये देखिए जुरासिक डायनासोर। मगर ज़्यादातर जो डायनासोर मिलते हैं वो क्रिटेशियस डायनासोर, जो कि सबसे मॉडर्न डायनासोर कहलाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे म्यूजियम्स बने हैं, बहुत सारे तो नहीं बने हैं मगर एक बहुत बढ़िया म्यूजियम बना है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के काम के ऊपर। ये बालासिनोर में है, गुजरात में, और मैं ये दिखाना चाहता हूँ आप लोग को। I want to show you that in Gujarat, in a village known as Raoli, dinosaurs were excavated by the Geological Survey of India. आप लोग इंटरेस्टेड होंगे कि डायनासोर एक्चुअली निकलते कैसे। तो ये एक पर्टिकुलर जो उस एज का बेड होता है उसमें बेरी हुए थे उस जमाने में, और अब जो जियोलॉजिस्ट हैं उस जमाने के बेड को खोद करके ये बेड्स एक्सपोज कर रहे हैं। ये देखिए हड्डियां हैं, बहुत सारी हड्डियां, और आप अगर गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये थ्रेड स्ट्रिंग्स पड़े हुए हैं। ये इसलिए है ताकि साइंटिफिकली आप बाद में हड्डियों का ओरिएंटेशन और कैसे निकली ये बाद में आप दर्शा सकते। और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो राजासोरस था वो एक्सकवेशन के कई साल बाद बना, और अगर ये नहीं होता, अगर ये इतना मेटिकुलस मैपिंग नहीं होती तो ये नहीं पता चलता कि जो राजासोरस है उसकी हड्डियां देखिए पीले में दिखाई गई। तो और भी डायनासोर है मगर राजासोरस की जो हड्डियां हैं, जो हम लोग का सबसे खूंखार डायनासोर कहलाता है, वो पीले में दिखाई गई है। और इसकी वजह यही है कि जब 1983 में, अब तो कई साल हो गए, करीब 40 साल हो गए, जब ये एक्सकवेट हुआ था तो ये मैपिंग करी गई थी जिससे ये पता चलता है कि ये स्कल का बोन है, और इन बोन से इट्स बीन पॉसिबल टू रिकंस्ट्रक्ट द स्कल एंड द लोअर जॉ। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक एक्टिविटी होती है जिससे पता चलता है कि डायनासोर कैसे रिकंस्ट्रक्ट होते हैं।
एक और डायनासोर है जो कि हैदराबाद में बिरला साइंस सेंटर में है, और ये फिर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग इंटरेस्टेड होंगे कि आखिर ये जो बोन्स है ये मिलती कैसे। अगर आप ये नीचे का डायग्राम देखेंगे तो ये जो जुरासिक डायनासोर है, ये जो जुरासिक डायनासोर है इसकी हड्डियां देखिए, ये पत्थर में है और ये निकाली गई हैं, फिर ये म्यूजियम ले गए, they took the bones to the museum, then they had to construct a scaffold, and then they were able to build this, reconstruct this dinosaur. So there are two Jurassic dinosaurs in India mounted. One is in Hyderabad, and as I said, the other is in Calcutta. जो सबसे बड़ी डिस्कवरी हुई इंडिया में वो मेरे हिसाब से डायनासोर के घोंसलों की, द नेस्ट ऑफ डायनासोर. सो इफ यू लुक at this map again, you will see that you find a number of nests of dinosaurs. अंडा तो ऐसा लगता है अगर जब बाहर निकलता है तो बिल्कुल स्फेरिकल होता है. जो बड़े वेजिटेरियन डायनासोर्स हैं उनके अंडे गोल, ये करीब, ये पेंसिल है स्केल के लिए, ये 16 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर डायमीटर के होते हैं. ये आप देख सकते हैं. ये घोंसला है. ये घोंसला वही है जो उस जगह जहाँ आजकल बालासिनोर में एक म्यूजियम बना है, और मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये कितना खूबसूरत है. ये देखिए, एक अंडा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा. करीब बड़े डायनासोर करीब 10 अंडे करीब होते थे. ये क्लोजअप है. क्लोजअप का मतलब कि इसको मैग्नीफाई किया गया है ताकि इसका आप छिलका देख सकें. यू कैन सी द शेल. सो वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन डायनासोर स्टडीज इज कि आप पूछ सकते हैं कि भाई ये डायनासोर क्यों है, कुछ और भी हो सकता है. तो in order to answer that question we look at the shell. और जो नेक्स्ट स्लाइड्स है मैं आपको दिखाऊंगा कि साइंटिस्ट एक्चुअली पहचानते कैसे हैं. क्योंकि हमेशा सवाल उठता है कि भाई ठीक है आप कह रहे हैं कि यह मान लिया, मगर एक्चुअली साइंटिफिक बेसिस क्या है. तो इसको बहुत गौर से देखें. मेरे पास एक स्पेसिमेन है, बाद में मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने के लिए. जो साइंटिफिक तरीका आइडेंटिफिकेशन का है वो इस छिलके का एक थिन सेक्शन बनाते हैं. जो लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं उनको पता है थिन सेक्शन क्या होता है. मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि एक्चुअली होता क्या है. ये एक थिन सेक्शन है डायनासोर छिलके का. अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो छिलका है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना. और यहाँ अगर आप लाइन देखेंगे, अगर आप ये लाइन देखेंगे तो ये एक्चुअली एयर कैनाल का मतलब जो ग्रोइंग एम्ब्रियो था वो अंदर था और ये एक्सटर्नल सरफेस. मैं आपको ये स्पष्ट करता हूँ एक इस डायग्राम से. ये मान लीजिए जो मैंने आपको वो स्फेरिकल एग्स दिखाए थे उसका एक थीमेटिक डायग्राम. जो एम्ब्रियो है, जैसे चाहे वो चिकन का हो या छिपकली का हो, डायनासोर का हो, वो सब एक जैसे. ये देखिए, ये चंडीगढ़ म्यूजियम में मैंने दर्शाने की कोशिश की है कि कैसे ये शेल टूटता है और डायनासोर का बच्चा बाहर निकलता है. मगर ये पूरी प्रतिक्रिया में बहुत दिलचस्प चीज़ें. अब आप ये समझिए
जब एम्ब्रियो या ये जो छोटा बच्चा है जिसको एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, इसको हवा की जरूरत, इट नीड्स ऑक्सीजन। इसीलिए जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया था, सॉरी, इसमें जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया था, ये देखिए बाहर से ऑक्सीजन खींचने के लिए, एयर को खींचने के लिए कैनाल्स होते हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी है। और ग्रोइंग एम्ब्रियो को खाना भी चाहिए, जो योग कहलाता है। तो जो चीज़ें छिपकली में पाई जाती है या किसी और रेप्टाइल में पाई जाती है, वो यहाँ भी पाई जाती है। मगर अब आप ये सोचें कि ये धीमे धीमे बढ़ता जाता है, इसकी साइज बढ़ती जाती है, और ये जब शेल के बाहर, एग के बाहर आने को है, तो होता यह है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट, जो अंदर का ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो छिलका है, वो डिसॉल्व होता जाता है। ये एक एंजाइम भेजता है जिससे कहीं कहीं ये कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व होता है, उसकी हड्डियां मजबूत होती हैं, एम्ब्रियो की हड्डियां मजबूत होती हैं, ये बढ़ता जाता है, और जो अंडा है वो कमज़ोर होता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि ये बढ़ जाता है एंड इट्स एबल टू कम आउट, इट्स एबल टू ब्रेक द शेल at the weakest point and come out. So just to show you, if you look at this diagram, for those of you who are interested in the scientific aspects, मैंने बताया था this is the tangential section, यानी अगर मैं शेल को लूँगा और मैं ऐसे काटूँगा, this is a tangential section, and you can see that अगर आप ये गोले गोले देख सकते हैं, these are air canals. Just look at the air canals. This is the air canals on the top of a dinosaur shell, and this is an air canal that takes the oxygen to the growing embryo. तो बहुत ही remarkable system है, जिसमें चाहे वो डायनासोर का हो चाहे छिपकली का हो, बेसिकली बायोलॉजी एक ही है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये ज़रूर है कि डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए, मगर उसके पीछे ये है कि दे वर लाइक एनी अदर रेप्टाइल एक्सेप्ट दे वर वेरी लार्ज। ये जो ओवल एग्स है मैंने आपको दिखाया था, अभी तो मैंने आपको राउंडेड एग्स दिखाया, अभी मैं आपको ओवल एग्स दिखा रहा हूँ। ये मीट ईटिंग डायनासोर्स के अंडे हैं। थोड़े फर्क है, थोड़े छोटे हैं मगर ओवल है। एक और चीज इंडिया में मिलती है और वो है डायनासोर का गोबर, डंग। दिस इज एक्चुअली अ पॉलिश सेक्शन। ये देखिए एक सेंटीमीटर है, तो ये प्रिजर्व्ड है। और मेरे पास एक स्पेसिमेन है, ये देखिए, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये डायनासोर का डंग है, गोबर है। मगर इसमें अच्छी चीज तो ये है कि आप देख सकते हैं कि डायनासोर खाता क्या था। ये पत्तियां हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही कुछ बीज है। तो ये बहुत ही रिमार्केबल डिस्कवरी है, जो कि एक गांव है महाराष्ट्र में, पिसडुरा, जहाँ ये डंग मिलता है जिसको कोप्रोलाइट कहते हैं। और इसके जांच से आप ये पता लगा सकते हैं कि खाता क्या। अब मैं लास्ट में आपको थोड़ा ये बताना चाहता हूँ कि एक्सटिंक्शन कैसे। एक चीज आपको समझनी है कि सिर्फ डायनासोर लुप्त नहीं हुए, 65% to 70% of all life, whether it was in the air, on ground or in the ocean, died with the dinosaur. तो ये कहना सही नहीं होगा कि ये सिर्फ डायनासोर्स खत्म हुए।
ये कहना नहीं होगा, बहुत सारे और जीव जंतु प्लांट्स एक्सटिंक्ट हुए। और इसके दो रीजंस हैं। एक तो ये एक बहुत बड़ा मीटराइट जो करीब 10 किलोमीटर का था, 10 किलोमीटर डायमीटर का था, वो सेंट्रल अमेरिका में बहुत तेजी से आके क्रैश की। इसको कहते हैं एस्टेरॉयड इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। छोटे मोटे तो इंडिया में भी मिलते हैं। एक अगर फिर महाराष्ट्र में एक जगह है जहां आपको 10 किलोमीटर डायमीटर का एक लोनर क्रेटर मिलेगा, जो its origin also can be traced to an asteroid or meteorite impact. तो छोटे मोटे क्रेटर तो बनते हैं, मगर ये वाला क्रेटर जिससे 65% of all life died was extra large. It was around 10 kilometers in diameter, and this is where it hit. दूसरा रीजन जो है वो ये है कि इंडिया में एक बहुत बड़ी एक्टिविटी, वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही थी, और ये हो सकता है कि इसने भी अपना हाथ बटाया in the extinction process. So there are basically two theories for the Cretaceous extinction. One, the asteroid impact, and the second, volcanic eruptions. But now I think the consensus is leaning towards that it was the asteroid impact that created the loss of life on Earth 66 million years. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जब ये बड़ा सा एस्टेरॉइड अर्थ को हिट करता है तो पहली चीज ये होती है, एक ब्लास्ट वेव, एक बहुत ही विशाल और फोर्सफुल एक वेव आता है जो सब चीजों को नष्ट करता है. After that, water evaporates, rocks evaporate, and when water and rocks evaporate, they form a dark cloud. The material goes into the atmosphere and there's a dark cloud. But there's also one other thing that is generated, and that is the tsunami. So tsunamis are a part of this impact process. But I would like to tell you that this is very important, and I will tell you why it's important. So I told you that rocks and water go into the atmosphere. This basically blocks the sunlight, and what it does is that if the sunlight is blocked for 2 or 3 weeks, then the plants begin to die because there's no sun. So it breaks the food chain. So it's not only because of the impact, but the real reason is that there's worldwide destruction because you have a global darkness lasting for 3 or 4 weeks, and the plants die, the food chain is disturbed. Since the plants die, the animals eating plants, they die, and the animals eating the plant eating animals, they also die. So the real reason for the global demise or extinction in the case of the 66 million year old extinction is that the food chain was destroyed. So I would like to show you the last slide, is that that you have now in North America very good evidence of nearly the time at which
the asteroid struck. एक जगह है जिसका नाम है टेनिस. It is in North Dakota. और यहाँ एस्टेरॉइड ने हिट किया था. दिस इज द इम्पैक्ट साइट, द चिक्लो इम्पैक्ट साइट. और उस जमाने में नॉर्थ अमेरिका में एक समुद्र था जो कि इस जगह तक पहुंचता था. जब ये इम्पैक्ट हुआ तो जैसे मैंने आपको बताया, एक बहुत विशाल सुनामी आई जो यहाँ तक पहुंची. और सुनामी ने, ये देखिए सुनामी आ रही है, डायनासोर देख रहा है. और इस सुनामी में बहुत सारे जानवर, मच्छियाँ, डायनासोर, इनफैक्ट एक डायनासोर का पैर मिला है जिसमें अभी भी उसके स्केल दिखते हैं. सिर्फ इतनी जोर से ब्लास्ट हुआ कि सिर्फ ये बच पाया. तो एक यहाँ जो पत्थर हैं वो ये रिकॉर्ड करते हैं उन चंद मिनटों का, those crucial minutes when the asteroid hit Central America. And one reason why we are slightly sure is that when an asteroid hits, you get these rounded spherular structures which are known as cosmic spherules. ये impact के साथ साथ पाए जाते हैं. Basically melted glass. और ये जो बहुत significant feature है जो कि हर एक जानवर में छोटे छोटे, बहुत छोटे हैं, 1 मिलीमीटर का है, ये सब जगह पाए जाते हैं. इसका मतलब यह है कि एक ऐसी जगह पता चली है जहां आपको ये जो मोमेंटस कैटास्ट्रोफी थी इसके चिन्ह पाए जाते. तो ये साहब रॉबर्ट लापाल्मा ने इस पे काम किया. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. और इसके बाद ये लगता है कि कंट्रोवर्सी एक्सटिंक्शन की करीब ख़त्म है और एस्टेरॉयड वाज वन ऑफ द मेन कॉजेस. मैंने बताया कि इंडिया में भी ये लावा फ्लोज है जो कि पहले माना जाता था लावा फ्लोज ये ज़रूर है, वॉल्केनिक एरप्शंस से टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं. तो ये हो सकता है कि एक तो एस्टेरॉयड ने इम्पैक्ट किया और दूसरे जो डेक्कन लावा फ्लोज थे उन्होंने एटमॉस्फेयर में बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस इजेक्ट किए जिससे एक्सटिंक्शन करीब निश्चित हो गया. मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि बर्ड्स आर ग्लोरिफाइड डायनासोर. मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये फेदर्ड डायनासोर है. ये फेदर्ड डायनासोर, ये बर्ड नहीं है. बहुत मिलता जुलता है ट्रू बर्ड से. दांत है ट्रू बर्ड, जो असली बर्ड था जिसका एवोल्यूशन हुआ उसमें भी दांत थे. आजकल बीक्स में दांत नहीं होते. तो देयर इज अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन फेदर्ड डायनासोर्स एंड अर्ली बर्ड्स. एंड द लास्ट स्लाइड इज, अगर जो भी मैंने बोला आप उस पर यकीन नहीं करते हैं तो हो सकता है इस पे यकीन करें. The real reason dinosaurs became extinct. Thank you very much. Thank you so much, sir, for apprising our viewers about the remarkable facts that are associated with dinosaurs. We still have around 5 minutes left in this conversation and we have certain questions, if you allow. Yes, sir, of course. So my first question to you is, how can one become a paleontologist? मतलब कोई भी व्यक्ति यदि डायनासोर्स की पढ़ाई करना चाहे और पैलेंटोलॉजिस्ट बनना चाहे, जीवाश्म वैज्ञानिक भी जिसे कहते हैं, तो किस तरह से इसकी तैयारी की जा सकती है? देखिए, इसके लिए आपको कम से कम एक बीएससी डिग्री या एमएससी डिग्री चाहिए. चाहे ज़्यादातर जो पैलेंटोलॉजिस्ट बनते हैं वो या तो बायोलॉजी की
डिग्री हासिल करते हैं ज़ूलॉजी या बॉटनी या जियोलॉजी की डिग्री। तो इसके बाद आप किसी यूनिवर्सिटी में आप दाखिला ले सकते हैं और वहाँ से आपको ये, अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, ये एसेंशियल डिग्रीज होती हैं। और ये जो हम लोग के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम जी, उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम मैं इस वक्त मुझे याद नहीं आया। उसमें ये दिया है दैट देयर आर सम प्रोफेशंस दैट यू कैन, professions that are not very common, but he has mentioned a lot that how to become a paleontologist in one of those books that he has written. So basically you need a degree, MSc degree in biology or in geology. Thank you so much for answering that, sir. Another one is a very curious question from my end. I really want to know, you mentioned about food chain, so what did dinosaurs actually eat? So I showed you a picture in which I showed you the dung, and we examined the dung and we found lot of plants. So they basically, in those days where we get these specimens, you get lot of gymnosperm cones, you get leaves, you get seeds. So they ate all of that. They even ate grass because you had grass growing at that particular time. So the plant eaters, we don't have many scientific results for what the meat-eating dinosaurs ate, but the slide that I showed you showed a number of plants. They are the plants that were ingested and digested by dinosaurs. Another one also, sir, are there traces of any other organisms that existed alongside with dinosaurs? Are we able to make that out? Yeah. Absolutely. This is a very, very good question, and I should have mentioned this. That no animal can live by itself. And you had the whole ecosystem. The ecosystem had all kinds of plants. It had angiosperms, it had gymnosperms, it had fruits, but you had other animals such as snakes, turtles, crocodiles living alongside, including our ancestors, mammals. So it was just like any other ecosystem. Reptiles were just part, the large reptiles, the dinosaurs, were just part of this huge ecosystem, which had all kinds of animals and plants living alongside, associated. So thank you so much for answering that. Now I would request Sir Gagan sir to please conclude the session. Professor Sahni, this was indeed very interesting description about many facts, but there are some silly questions. You may find little interesting those questions. Yes, you referred about the volume versus surface area calculations for the animals, like because the dinosaurs being the bigger animals, they have larger volume to surface area ratios, true. But as we see today, even the animals, those who have larger volume as compared to their surface area, means the ratio, the larger volume to surface area ratios, the frequency of taking food is rather lesser, rather grim. If suppose if you see a bird, a small bird, the frequency of taking food is much higher as compared to what we do, what the camels do, or what the do we get some idea about that? I mean, how often or what used to be the frequency of taking food by these gigantic animals like dinosaurs or so on? Any idea, so sir? One thing, that's a good, very, very good question. So you must understand, it's a question of metabolic rates. I told you in the diagram, that's why I showed you those diagrams, to understand the biomechanical part.
So birds have to eat a lot because they have high metabolic rates and they have to maintain high temperatures. Reptiles are slightly different. They may have been, some of them may have been called warm-blooded, but most of them are believed to be cold-blooded. So in cold-blooded animals, you don't, you take a python or you take some large reptile today, you'll see that it eats once and then doesn't have to eat for a very long time. So it takes all the time in digesting its food because the digestion is not as good as that for warm-blooded. So to answer your question, the dinosaurs, especially the large ones, were not always feeding. They may have fed once or twice to satisfy their needs, and then there was no need for them to eat all the time like in birds. Yes, thank you very much, Professor Sahani. We really loved listening to you. We enjoyed listening to you. I am sure that our viewers might have also enjoyed. I request my viewers to forward their questions to us either through our telephone number which was shown in the beginning or through our email addresses. Viewers, next time this was our endeavor on exposing you towards the understanding of dinosaurs' lives on this planet Earth. And then now we are going to have a next session on 20th of May, Friday, at the same time 10 to 11 am, when we will be having Dr. Jasjit Singh Bagla from Indian Institute of Science Education and Research, Mohali, Punjab. He will be here in the studios and he will be talking about gravitational lensing. So looking forward meeting you again. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thanks a lot, sir. Here I would like to extend a word of thanks to both the guests who have been a part of this conversation. Thank you so much, Professor Sahani. And once again, a word of thanks to Dr. Gupta for being an active part of this discussion. I'm sure that you all are looking forward to our upcoming session on 20th May 2022 regarding gravitational lensing. Now it's time to say goodbye to you for this particular session, but stay connected to NCERT as at 12 noon we have another session of teaching learning interventions for inclusive classrooms for all our viewers. Stay connected to NCERT. Namaskar. Thank you.